स्माइल, अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताओ यार. टॉक अ लिटिल अबाउट योर स्ट्रगल. मे बी यू कैन बी एन इंस्पिरेशन टू पीपल हियर गोइंग थ्रू द सेम जर्नी यार. अभी मैंने स्टार्ट किया था आई थिंक इन जून विद यू गाइस एंड आई वाज लाइक प्रीटी होपलेस एट दैट पॉइंट कि पता नहीं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा. बट उसके बाद after 4 months, it took 4 months of certifications and rejections and everything, and I was at the verge of like giving up, and I even talked to you about like changing to tech sales. And उसी वीक में जब मतलब मैंने सोचा था कि हाँ now I have to do my resume and everything, I got a call and they asked me to make some social media posts, and I didn't sleep the whole night. I made posts for them like 6-7, and I sent it to them in the morning at 6, and I think that hit them. Like she stood up whole night and did that for them, and they called me at 9 and for interview, and I went there and they loved it and they hired me on the spot. Yeah, so that was the cool part. मैं वही सोच रहा था. मैं सुबह स्माइल का मैसेज आया है 10 बजे, बोल रही है मैं जा रही हूँ इंटरव्यू के लिए. 12 बजे मैसेज करिए मेरी लग गई जॉब. वहाँ नहीं सैलरी फास्ट. मुझे खुद ही कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है. So here's a classic example of another idea in life कि पहले कुछ नहीं होते हैं, then सब कुछ एक ही दम से हो जाता है. Why? Because things मुझे अभी भी compound over विश्वास time. नहीं हो रहा है. Yeah, this ये same happened with Maitri. She was asking us again and again. पक्का मेरी जॉब लग गई है ना? मैं तो अभी 2-3 दिन से अनबिलीवेबल वाले मोड में ही जा रही थी. नो आई हैव टू गो टू दैट पार्ट टाइम जॉब, और वहाँ पे मतलब एवरीथिंग इज सो नाइस और अच्छा है. मतलब बहुत अच्छे लोग हैं सब, ऑनर भी बहुत अच्छा है वहाँ पे वैसे. एंड आई हैव क्रिएटिव फ्रीडम, यू नो, व्हिच वी वर टॉकिंग अबाउट पेरेंट एजेंट थिंग. And they said like you are the boss, do whatever you want to do for the company, and they have given me iPhone 14, iPad Pro, MacBook Pro. तो वैसे अच्छा Oh लगा wow, मुझे सब. तो सही है. cool gadgets पे मिल गए आपको. That is nice यार. तो इससे पहले आप डोमिनोज में थे? हाँ जी, डोमिनोज में. Okay. And मतलब obviously उससे तो काफी ज्यादा सैलरी है, so that's good. And you also negotiated, that's also good. एंड आपने वो भी नेगोशिएट किया था, बोल रहे थे आने जाने वाला खर्चा. हाँ, ट्रांजिट भी दे आर गोइंग टू पे, और उसमें मतलब और भी बेनिफिट्स हैं शायद. वो एरर एसपी जो देते हैं कंट्रीब्यूशन. या कूल. तो इमेजिन यू कुड गो 4 months back in time, or maybe 3 months back in time, Smile, to the older Smile who had almost given up. What would you tell her? Keep at it, and I always had belief in me, but वो ही होता है ना, जब तक we don't get the result वो ऐसे shaky रहता है कि हो भी पाएगा कि नहीं. But no, now things have turned out the way कि हाँ, just keep at it, so trust yourself. Yeah, good. And जो आपको चाहिए था वही मिल गया. And उसमें creative freedom भी हाँ, है. exactly, and I'm loving it. अभी तो 3-4 दिन हुए तो. Yeah, that's great. Know about the people early on, and अगर आपको लग रहा है कि they are good, plus culture भी अच्छा है, जैसे आपने बताया, activities भी होती हैं, so that keeps a person more engaged rather than बस काम पे जाना है ना जाना. Yeah, that's great यार. Very happy for you. इसके अलावा Smile, when you were, जब 4 महीने पहले या 3 महीने पहले हमारे पास आए थे, obviously उस टाइम पे you wanted a way out of what you were going through, right? And obviously there are other options out there in the market too for career coaching and वो सारी चीजें. Any specific reason why you came to us? I was following you guys since long time, and I was so impressed. Like, he's also of my age and he have done so much in his life, and I just wanted to be connected with you guys, and I saw testimonials as well. बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो why not give it a shot, and it's worth it. And now see, it was worth it. So yeah, I'm so happy things worked out for you यार. I'm very happy. मेरे को उस दिन बहुत खुशी हुई जब तुमने सुबह मैसेज किया, फिर दोपहर को मैसेज किया, मेरी जॉब लग गई मेरी. I was so proud of you यार. Yeah, he told me Smile की जॉब लगी. Like इंटरव्यू कब हुई थी? Yeah. मुझे कुछ भी प्लान करने का टाइम ही नहीं मिला कि मॉक इंटरव्यू या कुछ भी.
Yeah, उसके ऊपर भी the actual reason I'm very happy for you is कि यार you got the fruit of your labor, and it's actually a good thing it took time, because over this time you developed character यार. अब any time in future in life when things go south, which they are going to go south, like ठीक है, I don't want to break your bubble, life is shit, it is going to happen, ठीक है. And whenever that happens, you can reference back to this part of your life. यार तब भी ऐसे हुआ था, तब भी I persevered, and I did not give up, and I went through it. And that's a very, very important lesson to learn, yaar. I'm so happy you went through the stress, and now you're a better person. Good. So now Smile will all the money, and of course आपकी you are doing what you wanted to do, and of course you're making more money. How do you think life is going to change up? Or it has already changed? My parents are happy. I can give them some things at least. अभी मम्मी का बर्थडे आने वाला है, तो I've already booked an iPhone for her. तो अच्छा है. Oh, nice. अच्छा लग रहा है. मतलब वो जो स्ट्रेस था ना ऐसे माइंड में, अभी थोड़ा ऐसे शांत हो गया. And I'm just in the present, not thinking about future, not reliving the past, just in here for now. अभी enjoy. Good. Good यार, good. Very happy for you. Things work out यार. अगर आपने मेरी स्टोरीज भी देखी हो, उसमें भी आए, दिस इज व्हाट आई टेल यार, कि कीप वर्किंग हार्ड, मेहनत करो, थिंग्स वर्क आउट. आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स दैट आई हैव लर्नड इन माय लाइफ. इफ यू जस्ट डोंट गिव अप, थिंग्स वर्क आउट यार. There is this crazy thing about the universe that if you don't give up, it just surrenders to you. Yeah, that's exactly what happened. Cool, very happy for you. Anything else that you would like to tell to people who are going through a tough time? Call me. Yeah, just don't lose hope. अपने ऊपर विश्वास रखो and just keep working at it. Like जो चीज जैसे सर्टिफिकेशन या कुछ भी, हम लोग ऐसे हो जाते हैं कि यार कुछ भी तो रानी है, तो क्या ही फर्क पड़ता है, छोड़ो इसको. पर नहीं, करते रहो. यूनिवर्स में मतलब ऐसे बटरफ्लाई इफेक्ट, आई बिलीव इट्स काइंड ऑफ अ बटरफ्लाई इफेक्ट. अगर आप छोटा छोटा भी अपना आउटपुट देते हो तो उसका कुछ तो वापस आता ही है एट द एंड. गुड, ग्रेट. कि आप जॉब्स अप्लाई कर रहे हो बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मशीन गन मैसेज सेंड कर रहे हो, सो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? आप क्या करते थे रोज? मैं एक्चुअली वो मशीन वाला तो करती थी, और मैं उससे सिंपल जॉब्स और ईमेल्स भी करती थी बहुत सारी. कुछ बट आई डोंट नो, दे इवन आस्क्ड मी लाइक हाउ डिड यू फाइंड अस, एंड मेरे को तो याद ही नहीं कि इतनी सारी कंपनीज को रोज करते थे. आई थिंक ऑन लिंक्डइन और समथिंग. बट Okay, and how many iterations did you do every day? कि jobs apply करना, machine gun total? Every day I think around 20. I never went to 30 though. But you did पर it regularly. इतने टाइम में टोटल एस्टिमेटेड कितनी होंगी? I think you joined on July 3rd, तो तब से roughly आपने कितना send किया होगा? बीच में कभी रह जाता था, तो 20 into like about 3-4 months का तो होगा ही, 2-3 से. Yeah, quite a lot. यार, cool यार, very happy for you. अब और कोई क्वेश्चन नहीं है. I just want to say that I'm really happy for you, especially कि आपको सोशल मीडिया में जाना था, and you are such a creative person. मैंने जब LinkedIn भी रिव्यू की थी, I saw your banner, I'm like wow, this is good. If you get a chance to actually leverage this for a company, you would do great.